वेलकम टू एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी। एक्सपर्ट स्टेनो अकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने की थी रिविजनरी एक्सरसाइज। मैंने आपको एक एक फ्रेज बताया था कैसे बना था, हमने एक एक लाइन के बारे में बात की थी। आज इस क्लास में हम इस रिविजनरी एक्सरसाइज की डिक्टेशन लिखेंगे। डिक्टेशन में जो फ्रेजेस होंगे वो इकट्ठे बोले जाएंगे। तो डिक्टेशन शुरू की जा रही है। ट्रूथ हैज बीन divided into three kinds: truth about things, truth of thought about things, and truth in the accurate expression of thought about things. Full stop. According to ancient authorities, truth could be said to be a correspondence between thought and thing. Full stop. It seems perfectly easy for anyone to think accurately about a thing with which he is quite well acquainted, but the case is not quite so simple. Full stop. Suppose an unfortunate accident occurred in a London street and that 6 people witnessed the accident and were asked to relate exactly what had happened. Full stop. It is quite certain that we should receive different accounts from each of them. Full stop. The result would not be a correspondence between thought and the thing thought about, and so the statement would not be true. Full stop. It is to be regretted that limited space prevents a more extended argument, though we could extend it if we cared to do so. Full stop. तो ये थी रिविजनरी एक्सरसाइज की डिक्टेशन। इसमें आपने 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है और एक एक चीज़ देखनी है, एक एक फ्रेज को चेक करना है, एक एक लाइन को चेक करना है कि आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।